Hello beautiful people, this is your moment Shan and welcome back to my YouTube channel Nashikar Shan. So guys, आज का जो वीडियो है वो होने वाला है इंस्टॉलेशन ऑफ नकल गार्ड्स ऑन बजाज एवेंजर 220 क्रूज. मेरा जो हैंडल है बजाज एवेंजर 220 क्रूज का बटरफ्लाई हैंडल है, इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू इंस्टॉल दोस नकल गार्ड्स ऑन दैट. सो जाने से पहले इंस्टॉलेशन के प्रोसेस में जाने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू दैट मैंने एक साइड का इंस्टॉल कर लिया था बिकॉज मैं नहीं चाहता था कि मैं डायरेक्टली ब्लॉग शूट करने नीचे जाऊँ इंस्टॉल पार्किंग में जाऊँ इंस्टॉल करने के लिए और पूरा बोलते ना फिटिंग जमे नहीं बिकॉज इट्स अ बटरफ्लाई हैंडल. अगर उसकी फिटिंग नहीं हुई कुछ प्रॉब्लम्स आती है तो पूरा ब्लॉग कंफ्यूजिंग हो जाएगा एंड यू गाइस विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड कैसे इंस्टॉल कैसे किया. सो ऑलरेडी मैं नीचे जाके अब एक साइड का मैंने इंस्टॉल कर दिया हूँ एंड इट्स बीन प्रॉपर्ली इंस्टॉल्ड. यू कैन सी इट समवेयर ओवर हियर. So you can see it's properly installed. So मैं अब दूसरे साइड का इंस्टॉल करूंगा in which I would be showing you guys in detail like how you can install knuckle guards on Bajaj Avenger 220 Cruise with the butterfly handle. So ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, नीचे पार्किंग में जाते हैं और इंस्टॉलेशन करते हैं. So guys, this how the demo will look. मैं एक डेमो दे रहा हूँ. ये जो हैंडल बार है उसके अंदर से यहाँ से ये नट जाएगा. ये हमने मार्केट से अलग से परचेस किया है बिकॉज इसका जो ओरिजिनल जो स्टॉक था वो स्टॉक फिट नहीं हो रहा था, वो छोटा हो रहा था, तो हमने ये मार्केट से अलग से लेकर आए. ये हैंडल बार में यहाँ से लगेगा, इसकी ये फिटमेंट है, ये यहाँ पर ऐसे इंस्टॉल होंगी और दिस इज हाउ समथिंग यू नीड टू इंस्टॉल इट. सबसे पहले हम लोग ये खोल लेंगे. सो गाइज दिस इज हाउ आई इंस्टॉल दिस गार्ड्स. अब यहाँ पर एक नट छोटा पड़ रहा था जिस वजह से हमने क्लिप का एक ही साइड का नट टाइट किया है, पर लग बाय चांस वो इतना टाइट हो चुका है दैट यू कैन सी आई एम ट्राइंग टू, मैं पकड़ के इसे हिलाने की कोशिश कर रहा हूँ पर वो एकदम फिट हो चुका है. अब दूसरी जो बात करें, एज यू कैन सी देयर इज अ लॉन्ग एडजस्टमेंट नट आउट हियर, यू नो. So this is for the setting between your clutch and your brakes so that it doesn't create any disturbance in them. अब ये एडजस्टमेंट से आपके क्लच और डिस्क ब्रेक में कोई डिस्टर्बेंस नहीं आएगा. मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है आप नकल गार्ड्स इंस्टॉल करते हो और वो डिस्क ब्रेक पकड़ने में छोड़ने में बोलते हैं ना डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, या फिर हल्का सा दबा हुआ रहता है जिसकी वजह से गाड़ी थोड़ी दबकर चलती है, या फिर क्लच ब्रेक पूरा नहीं खुलता है जिस वजह से प्रॉब्लम होती है. So this will create a proper distance between your clutch and your knuckle guard. So this is the adjustment nut.
that's it guys, this was the installation of knuckle guards on a Bajaj Avenger 220 Cruise. हम नीचे शूट कर रहे थे, गर्म बहुत हो रहा था, फटाफट फ्रेश हो गए. So that's it guys, if you have liked this video don't forget to give a thumbs up, comment करके बताओ मुझे वीडियो कैसा लगा, and if you're watching my video for the first time don't forget to hit the subscribe button which is at the bottom with the notification bell. Till then, दुआ में याद रखो.